the iconic voice of India or somebody else. So I think that's the big experiment. That's one of the reasons which should make it interesting. Second, I think it's a tale of, in all industries and all kind of things, it's a tale of, and it's a model for any kind of work, which is, how to be a team. In a team, people have egos, people kind of think one is better than the other. How it's important to kind of understand that nobody can become successful alone. And that is the theme of this film. I hope you guys all enjoy it. It's releasing tomorrow. Please go to the theatre after the Mumbai International Motor Show. Thank you very, very much. Thank you so much, Mr. Balki. Can we please have a big round of applause? Alright, moving to Mr. Shamitabh Bachchan. Sir, how do you feel? Please share your views with us, and especially about Shamitabh as well. Thank you so much, ladies and gentlemen, for inviting me here today and for giving me the honor of opening the Mumbai International Motor Show. I'm very excited to find the city of Mumbai organizing such events where we bring in the very best from all over the world, including some of our more indigenous products, which are now ready to compete with the rest of the world. I've always felt a great amount of pride when India moves ahead, moves along with the rest of the world, competes in the facilities which are normally associated with the West. I therefore wish this motor show all the very success, and I hope that we continue to build, to encourage and to expand the horizon of motors. I do feel that it's all very well to bring in all these lovely cars, but we must have better roads and better traffic sense for them to be used correctly. I intend working with the traffic department to make sure that rules and regulations and traffic laws are followed diligently, and also the condition of our roads, and make the people generally more conscious about traffic. About the film, I think Balki has already said enough. It's been a great pleasure always to work with Balki because he brings new ideas, new subjects. And Shamitabh is again a very novel subject. Perhaps a subject that has never been seen before on Indian cinema. The plot is very unique and different. It's a plot where there are two individuals. Both are talented in their own respect. One is keen to become a star in the film world, but he doesn't have a voice. And the other is the character that I play, who is a very old, frustrated old man, and who has a voice. So Akshara, who plays an assistant director in the film, joins these two commodities together. So I will give my voice to Dhanush, and how with that is able to achieve success. And when you achieve success, you'll find that ego comes into play. One thinks that he's there because of his talent, the other thinks that because I lent him my voice, therefore he has succeeded. That's what the basic story is. But really it's about people coming together, and as Balki said, when people work together, work in a team, success is guaranteed and assured, rather than when you want to go out individually. That is basically the theme. I also feel it's a very subtle statement and a comment about the Indian film industry, which is hidden inside a beautifully constructed story. So those of you who will go and see the film will find these little subtleties about Indian cinema, as well as the story that I hope you will enjoy. Thank you so much for having me here, and wishing all the very best to the Mumbai International Motor Show. Thank you. Thank you so much. And now moving on to beautiful, gorgeous, stunning, I have no words to say, Akshara. Miss Akshara, how do you feel to be a part of this beautiful grand event, and also please tell us something about Shamitabh. Thank you for having me here. I love cars, so I'm so honored to be here, and I'm so excited. And I wish best of luck. And
Yes, like I said, I'm excited about Kaj, I'm excited about Shamitabh as well, which is releasing tomorrow. It's uh, it's a very special film. It's unique, and like Mr. Bachchan and Bharti so said, they just summed it up perfectly. I couldn't say it any better. And I hope you enjoy watching the film as much as we've enjoyed working, and we've put in a lot of hard work. So I hope you enjoy the film tomorrow. All right, thank you so much, Ms. Akshara. All right, as they unveil the magazine, can we please give them a big round of applause, ladies and gentlemen? Well, the most awaited time for the press conference or the press members out here. The forum is now open to the press, and regards those most awaited questions. You have to ask a legend that. I don't know who you ask. You are a legend, so please be with you. I don't know what you mean by that. I'm just another small member of a very wonderful fraternity called the film industry, and very proud to be there. I find having associated with it for 45 years, it's been a wonderful association. I wish the industry all the very best. I've seen it grow from the mid-60s onto almost the early part of the year 2015, and seen a lot of progress, seen a lot of changes. I'm delighted by the new generation. I'm very excited to be having an opportunity to work with them. They are very committed to their work, they're very talented. I get to learn a lot from them, and I hope that the future of the film industry keeps on increasing in this manner. We are at a stage, I think, where perhaps the number of people that watch Indian cinema is larger than the number of people that watch Hollywood cinema. Of course, the finances are different, but I hope it grows, and I hope it reaches a stage where we become the number one in the world. हेलो बच्चन साहब, आपसे मेरा एक सवाल है। आपने अपनी लाइफ में सबसे पहली गाड़ी कौन सी? अपने पैसे से या माँ बाबा जी के पैसे? अपने पैसे। It was a Fiat, यहाँ मुंबई में, सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, और नंबर भूल गया उसका, but that was with my first salary. सर, यहाँ पर आपको बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। ऐसी कौन सी गाड़ी है जो आप लेकर जाना पसंद करेंगे सर, यहाँ पर जो आपकी गाड़ी है? मन तो करता है कि जितनी सबसे अच्छी गाड़ियाँ सब हो जाएं, और चलाने का मुझे बहुत शौक है। आज भी मैं सभी गाड़ियाँ अपनी चलाता हूँ स्वयं, लेकिन ये संभव नहीं है। बल्कि साहब, आपसे भी यही सवाल करा मेरा, यहाँ पर आपने कितनी सारी गाड़ियाँ देखी, कोई एक गाड़ी जो आप ले जाना चाहेंगे? You'll have to hold the mic a little closer. या हेलो Hello. I haven't got around. I came straight in here. ओके, उसके बाद अक्षरा, यू? They are all awesome cars, so it's really hard to choose. She likes the Batmobile. Alright, sir, over here. सर, सुना है कि आप अपने रेडियो के जरिए अपने प्रेजेंट शो से जुड़ने वाले हो, तो किस तरह से आप आरजे बनने वाले हो आज, तो हाउ मच एक्साइटेड यू आर फॉर दैट? ये नौकरी मैंने पहले कभी की नहीं है, तो पता नहीं किस तरह से कर पाऊँगा। बहुत से लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सिखाएंगे, और जाहिर है कि बहुत खुशी हो रही है। Alright, and this is going to be the last question. हेलो, बच्चन सर, हमेशा हमने आपसे
सुना है कि आप कहते हैं कि हर फिल्म से आपको डर लगता है जब फ्राइडे आता है, क्या शमिताभ के लिए भी वही फीलिंग है? क्या इस फ्राइडे से भी आपको डर लग रहा है? जी बिल्कुल, हर फिल्म से उनके पहले रिलीज होने से पहले हमेशा एक भय रहता है, डर रहता है कि पता नहीं जनता उसे किस तरह लेगी, क्या परिणाम होगा उसका। और आज भी जब शमिताभ कल रिलीज होने वाली है तो जाहिर है कि हमारे मन में तितलियाँ और कबूतर सब घूम रहे हैं। हेलो सर, आप वर्ल्ड कप के लिए भी कमेंट्री करने जा रहे हैं, कितना एक्साइटेड है आप इस चीज़ को लेकर? और मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आगे रिवील क्या है कि भारत में रोजाना 3 लोग टीवी की वजह से मर रहे हैं, तो आपने पोलियो पर भी बहुत बड़ा कैंपेन किया था, तो आप लोगों पर इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपका एडवाइस? दूसरा प्रश्न क्या है? जो टीवी जो लोग हैं ट्यूबरकुलोसिस, आरटीआई ने रिवील किया है, टीवी आरटीआई के जरिए रिवील हुआ है कि रोजाना भारत में 3 लोग प्रतिदिन टीबी से मर रहे हैं, तो आपके जरिए आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे इस बारे में? तो पहला प्रश्न क्या था? अबाउट वर्ल्ड कप। या वर्ल्ड कप एक छोटा सा अवसर मिल रहा है, और क्योंकि बाल्की को लगा कि हमारी फिल्म शमिताभ जो है वो ध्वनि साउंड पे आधारित है, तो क्यों ना कोई ऐसे एक माध्यम ढूंढा जाए जहाँ पर ध्वनि के जरिए, साउंड के जरिए हम अपने फिल्म का प्रचार कर सकें। तो एक छोटा सा अवसर मिलेगा मुझे इंडो पाक मैच पे। ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे क्रिकेट कमेंट्री के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी कुछ दिनों में कुछ क्रिकेट मैचेस देखूँगा, सुनूँगा कैसे वो लोग कमेंट्री करते हैं, और प्रयत्न करूँगा। तो मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि मैं एक कमेंटेटर बन रहा हूँ। हालांकि ऐसा सुना गया है कि कमेंटेटर जो है वो अनबायस्ड होते हैं, न्यूट्रल होना पड़ता है, लेकिन इंडो पाक मैच में न्यूट्रल होना ज़रा मुश्किल होगा मेरे लिए। तो चाहने वाले उधर से भी हैं, इधर से भी हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारा मन, हमारी शक्ति जो है वो भारत के लिए होगी। आपने शायद पोलियो की बात की। 8 साल हमने काम किया उसके ऊपर, और 8 साल के बाद भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो गया, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए अभी ये अभियान शुरू किया है, कुछ हमने कैंपेन वीडियोस बनाए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि लगातार इसमें लग करके हम समय लगता है इन चीज़ों को। और मैंने जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था तो मैंने उस समय कहा था कि ये ट्यूबरकुलोसिस आमतौर पर माना जाता है कि जो लोग गरीब स्थिति में रहते हैं, स्लम्स वगैरह में रहते हैं, उनको ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार फिर आप लोगों को कि 10 साल पहले मुझे भी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और यही एक वजह है जो मैंने सोचा कि मुझे भी इस कैंपेन में लगना चाहिए। और अगर सही समय पर हमें पता चल जाए तो इसका इलाज हो सकता है, और ये किसी को भी हो सकता है। कहने में थोड़ी सी धृष्टता मालूम पड़ती है कि मैं कहूँ कि मुझे अगर हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये बात नहीं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी को भी हो सकता है, और अगर सही समय पर वो पकड़ा जाए, उसका इलाज हो, तो आप स्वस्थ हो सकते हैं, जैसे कि मैं आज आपके सामने बैठा। बच्चन साहब, आज अभिषेक का जन्मदिन है, तो यहाँ पर आज अभिषेक का जन्मदिन है, तो यहाँ से आप कुछ उन्हें गिफ्ट करना चाहेंगे, क्या कुछ प्लान है आज? जी, गिफ्ट तो हमने रात को ही दे दिया उनको। अब यहाँ से जाएंगे, कौन सा ले जा सकते हैं, तो गाड़ी में रखना मुश्किल हो जाएगा। सर, जानना चाहते हैं क्या गिफ्ट? मैं तो चाहूँगा कि सब गाड़ियाँ उनको दे दूँ, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है भाई साहब हमारी। आज का कोई प्लान है पार्टी का? हाँ जी, आज कोई प्लान है पार्टी का? शमिताभ पर रिलीज होने वाली है, तो कोई फैमिली के लिए स्क्रीनिंग या फिर ऐसी कोई पार्टी रखी है आप? ये पार्टी के लिए आप क्यों पूछ रहे हैं? फैमिली के लिए? ये सब व्यक्तिगत बातें हैं, पर्सनल बातें हैं, घर में आप जो भी होगा होगा। Alright, Sir, thank you. Immediately one we last have a question. minute here. On a lighter note, I've gotten the opportunity to see you 10 years back riding your Mercedes AMG in a full Mercedes McLaren gear. Do you still share the same passion for driving? Yeah, I drive my car every day. Okay. I didn't drive it while coming here, but yeah, in the morning when I go to the gym and if I have to. Wearing the Mercedes McLaren gears? Well, yeah, I have, most of my cars are Mercedes. I hope the other models are not feeling bad about it, but it's very difficult to buy every model. Alright, thank you, Mr. Bachchan.